Hello students, welcome back. Children, in the last lecture we were studying about agricultural marketing. So today's lecture, children, we are going to focus on market infrastructure, which is actually related to agricultural marketing itself. Now, children, to facilitate agricultural marketing, we basically require certain amount of infrastructure if you want proper growth of agricultural marketing. So this is children just like some amount of general knowledge that you require here. So what kind of infrastructure is required, children? So first of all, we require the transport facilities, children. Achha, whether it's like we talk about the railways, the roadways, shipping, or it's the airways. Basically, children, we need to link the villages with towns and with the main markets. And there is some kind of requirement for a quantitative and qualitative changes in the transport system over the period. So quantity में भी बढ़ना जरूरी होता है बच्चों लोग transport, और at the same time children we require better quality transports. दूसरा होता है बच्चों लोग warehousing facilities. Now as far as warehousing facilities are concerned, I think when villages will be provided with the warehousing facilities as well as the towns, the farmers will be able to store their produce until they get proper price for their product in the market, children. So it is going to increase what is called as the holding capacity of the farmers. Achha, along with that, children, we also require the next infrastructure, that is requirement of the construction of rural godowns. Children, more than 5,000 storage projects have been constructed by the government. And this scheme has actually helped the farmers maybe to store their commodities near their field. And then they obtain, children, what is known as the pledge loans. Now, what are the pledge loans, children? Pledge loans are basically like whatever product or whatever commodities that are stored by you in the godowns. So you can pledge that produce and obtain a loan. Achha, once you sell that product, you can repay the loan. If you're not able to repay the loan by selling the product, then you can sell that product to the lender itself, children. Okay? Then we also require those establishment of regulated markets for all the minor as well as major crops and major areas. Regulated markets, children, are the markets which are controlled by the government with certain rules and regulations, you can say. And very important. Now, agriculture, children, as I already told you earlier, it's depending upon two types of finances that we require, children. We require what's known as institutional finance, and in children we also require what is called as non-institutional finance. But if you're referring to non-institutional finance, there is huge amount of exploitation that is carried out by the moneylenders. So farmers should be provided credit through institutional finance. Maybe cooperative societies होते हैं बच्चे लोग. We talk about the commercial banks that are there, and they will lend the money to the farmers at low rate of interest. So the farmers will not be forced to sell their produce at, might be for example like frustration prices, na children. And they will be able to get some remuneration for their product that is there, and they are going to fetch, children, remunerative prices. अच्छा, जैसे बच्चों मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, in a similar manner, children, the farmers or agricultural marketing, it requires what's known as the market information. Now, if there has to be proper functioning of the market, both the sellers as well as the buyers should have the complete information about the aspects of marketing and the prices that exist in the market, children. So whether is the prices which are existing in the market or the different aspects of marketing, so what is required, as I said, children, it's the information. Now the question arises, like how does the government provide information to the farmers? कि farmers को information किस तरीके से provide किया जाए? Children, if you are supposed to provide this information, so we can make use of mass media. अच्छा, prices के बारे में बता सकते हैं हम लोग. अच्छा, अगर if it's a regulated market, children, तो the information will be displayed so that farmers are saved from possible cheating through misinformation. Children, अगर farmer के पास ठीक से information नहीं रहेगा, तो फिर majority of you or many of you are aware that he will be cheated
with that misinformation. So government will display the information in the regulated markets, which is going to prevent the farmers from being cheated through misinformation. अच्छा, फिर आते हैं बच्चों मार्केटिंग सर्विस. अच्छा, अभी जहां तक मार्केटिंग सर्विस की बात है बच्चों लोग यहाँ पे, तो मार्केटिंग सर्विस विल बी कंडक्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजिंग, दैट आर द bottlenecks for the competitive markets, and then the government will take certain measures to remove these obstacles. And then lastly, children, we require what's called as the grading and standardization. Children, grading and standardization of agricultural commodities has been introduced. Farmers का problem मैंने आपको बताया कि like majority of the farmers in India are not able to market their products because they do not have the ability of marketing, or they do not have much of marketing knowledge. अच्छा, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बच्चों लोग ग्रेडिंग तो किया भी जाता है, एट द सेम टाइम स्टैम्प्ड विद सील ऑफ व्हाट इज नोन एज एगमार्क. ये कभी हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा रहेगा. एगमार्क चिल्ड्रन, इट्स अ mark, or it's a brand of what is called agricultural marketing department. So this mark is provided children after testing the quality and the brand of the product of Agmark, a central quality control laboratory in Nagpur. Okay, and then we got 8 regional laboratories. Different regions of the country have been established. तो अलग अलग जगह पे इसका टेस्टिंग होता है, and if they are passing through the quality test, then automatically they will be provided with a seal of quality, we can say children. So that's the market information. तो market infrastructure आ गया चलो, market information आ गया. The next thing that is required children is what is known as market training. किसकी जरूरत पड़ेगी? मार्केटिंग का ट्रेनिंग. अच्छा, now marketing of agricultural process children is a process which will involve lots of stages which are there, और इसके लिए फिर बच्चों लोग फार्मर्स को बहुत सारा नॉलेज एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड मैन पावर फॉर दैट. ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि लाइक बच्चों लोग कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स का ट्रेनिंग देना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वी रिक्वायर व्हाट आर कॉल्ड एज द मार्केटिंग स्किल्स. अभी आप सबको पता है चलो, मार्केटिंग एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, तो उसमें स्पेसिफिक स्किल्स लगते हैं. अच्छा, वेदर इट्स लाइक परचेसिंग और सेलिंग, आप सबको स्किल्स लगते हैं. अच्छा, अगर ये स्किल्स आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर वन पार्टी विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय द अदर पार्टी. आप सबको पता है बच्चों लोग कि अगर मैं परचेस करने के लिए कुछ परचेस करने के लिए जाता हूँ, मेरे पास अगर स्किल नहीं रहेगा बच्चों लोग, तो सेलर मुझे क्या करेगा? चीट करेगा. अच्छा, आई विल बी एक्सप्लॉइटेड. अच्छा, अगर बायर बहुत ज्यादा स्किल है लेकिन सेलर के पास स्किल नहीं है, तो फिर बायर उसको क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करके जाएगा. मतलब दोनों भी पार्टीज को प्रॉब्लम होता है. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी से दैट वी रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्किल्स. अच्छा, देन एक्वायरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन. Okay, acquiring a market information. So market information of policy measures and other factors affecting prices are all acquired by the marketing personnel, and they're required to be trained from where and how to obtain such information. तो marketing के जो लोग होते हैं चलो, उन लोगों को ये सब information पहले से ही obtain करके रखना पड़ता है. That's what is actually required, children, we can say. Okay. Now, then they also appoint what are called as the liaison officers. Achha, who are these people? Achha, they have a contact with the government offices, leading traders, exporters and importers to acquire all the essential information connected to marketing, whether it's like domestic as well as foreign. So these are the people who play the role of middlemen, we can say children. They are the personal relations officers, we can say children. अच्छा, फिर आते हैं बच्चों लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस. अच्छा, एग्रीकल्चर बच्चों लोग कभी हमने सिविक्स में पढ़ा था, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं उसको. कुछ चीजें होती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स पास करती है, तो दैट विल बी चिल्ड्रन बेसिकली नोन एज द स्टेट सब्जेक्ट. अच्छा, तो हर एक स्टेट का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है बच्चों लोग, इट्स लाइक द पेमेंट ऑफ फीस, चार्जेस. अच्छा, फिर बच्चों लोग इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट जब दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड करता है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ, तो सर्टेन कंडीशंस दे नीड टू बी फुलफिल. और फिर ये सब एस्पेक्ट्स का ट्रेनिंग देना बच्चों लोग, और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों लोग. वी नीड टू बी like well acquainted with the rules and regulations. And again we come to what is called as the grading and standardization. तो अभी भी मैंने आपको बताया था बच्चों लोग, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए कौन सा मार्क यूज किया जाता है? एग मार्क. ओके,
कहाँ पे होता है इसका टेस्टिंग? वी हैव सर्टेन रीजनल लेबोरेटरीज एंड द सेंट्रल लेबोरेटरी इन नागपुर. सो एगमार्क बच्चों लोग विल बी एनेबलिंग द प्रोड्यूसर टू सेल द क्वालिटी प्रोडक्ट. अच्छा, और ये सब में आपको फिर ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ती है. नाउ इन इंडिया वी हैव चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. क्या बोला? देखो, इन इंडिया वी हैव द चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. अच्छा, क्या क्या करते हैं बच्चों लोग मार्केटिंग के एजेंसीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन विद इज लाइक द टीचिंग, रिसर्च या फिर कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का. अच्छा, बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं बच्चों लोग फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. अच्छा, and then we are also providing training for better management techniques in the area of agricultural marketing and programs in agricultural marketing for effective implementing the various marketing formalities. So chalo, these are the activities which are undertaken by the Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing. अच्छा, agricultural infrastructure हो गया बच्चों लोग. Then we came across what is called as the market information. नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बच्चों लोग, इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट्स नोन एज द एनेबलिंग एनवायरनमेंट. चिल्ड्रन, एनेबलिंग एनवायरनमेंट में व्हाट इट मींस चिल्ड्रन, इट्स अ सेट ऑफ इंटर कंडीशंस विच इज लाइक लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है बच्चों लोग, फिजिकल इज लाइक रिलेटेड टू टैक्स, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल, कल्चरल. नाउ दे एनेबल द पार्टिसिपेंट्स टू एंगेज इफेक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. अच्छा, और ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो पूरा एंटायर प्रोसेस है बच्चों लोग, इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक. ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बच्चों लोग जो इधर दे सपोर्ट और दे वांट टू हिंडर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. तो क्या क्या एक्टिविटीज आते हैं बच्चों लोग? सबसे पहला जो एक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन. हाँ, तो वी रिक्वायर टू हैव सफिशिएंट क्वालिटी आउटपुट. हाँ, तो फिर आपको अप्रोप्रिएट सॉइल, अच्छे क्वालिटी के सीड्स, अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड. जैसे ही प्रोडक्शन होता है बच्चों तो आपको क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हेन वी रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन, लोकल मार्केट से हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए इसको हम लोग मतलब लाइक टाउन मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. फिर जैसे ही ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है वैसे बच्चों आपको लगेगा ग्रेडिंग. अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम लोग टेस्टिंग करके ग्रेड देते हैं. अच्छा, अभी भी हमने बात की थी बच्चों एगमार्क के बारे में, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मार्किंग करने का या फिर ब्रांडिंग करने का काम करता है इंडिया में. फिर आ गया बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी भी हमने की है. इट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों इंटीग्रेशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, वेयर हाउसिंग, ओके, स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑल दैट इज देयर. इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी स्पोक. अच्छा, प्राइसेस के बारे में, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा के दिया जाता है बच्चों लोग थ्रू मीडिया, एंड इट मे बी डिस्प्लेड थ्रू बोर्ड्स इन द रेगुलेटेड मार्केट्स. फिर सप्लाई चेन को बच्चों लोग कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. यहाँ पे वी नीड टू कोऑर्डिनेट द सप्लाई चेन्स. सो प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक का जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन आता है चिल्ड्रन, हैज टू बी वेल कोऑर्डिनेटेड. ओके, फिर आते हैं बच्चों लोग व्हाट इज कॉल्ड एज द लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क. ओके, लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क. अच्छा, जैसे कि बच्चों लोग ट्रेड होता है तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी सुने हुए विच इज लाइक रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड होर्डिंग. अच्छा, या फिर हो सकता है चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इन दैट. अच्छा, तो उसके लिए आपको लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी. जैसे प्राइस पॉलिसी लगता है बच्चों लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में वी रिक्वायर टू enact certain reforms that are there which are enacted by the government. अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होता है, तो ये सब के लिए आपको लीगल फ्रेमवर्क रेडी रखना, it becomes the need of the time, we can say children, right? अच्छा, फिर आता है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम. ओके, उसमें क्या क्या आएगा बच्चों लोग? फाइनेंस यानी क्रेडिट, मार्केटिंग, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है बच्चों लोग, और सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं. वी नीड टू डिस्चार्ज देयर रोल्स टू सपोर्ट द मार्केटिंग सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया. ओके, देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव दैट रेगुलेटरी सिस्टम. मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, तो दे मस्ट लाइक कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं बच्चों लोग, जैसे कि अनवांटेड मिडलमैन होते हैं, कभी कभी मार्केट्स में हद से ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, टोल्स होते हैं बच्चों लोग, फीस होते हैं. तो टू रूल आउट ऑल दिस थिंग्स, टू एलिमिनेट ऑल दिस थिंग्स, we require marketing regulatory bodies. And very importantly children, ease of doing business.
चलो जैसे कि अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से जाना है, विच लाइक ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज। अच्छा, डीले इन ग्रांटिंग द परमिशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कभी आपसे कुछ रिश्वत भी मांगी जा सकती है। हाँ, तो एंड द सिस्टम इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट हियर ना, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू बिजनेस। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? एनेबलिंग एनवायरमेंट। दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर एवरी फार्मर will be able to market his produce at a very remunerative prices in the market, children, right? Acha. And to conclude with children, we have the recent developments of marketing or agricultural marketing. What are the recent developments that have taken place? अच्छा बच्चों लोग, like दो अलग अलग levels पे, like the central and the state levels, they have brought many changes to improve agricultural marketing in our country. So we have developed what is called as the Model Agricultural Produce Market Committee, right? APMC करके बोला था उसको in 2003. So हर एक स्टेट अपने रिस्पेक्टिव जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटीज होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए बोला गया था, एंड वी एक्चुअली कम अक्रॉस दिस AMPC एक्ट्स व्हिच आर देयर इन द 2003. अच्छा, क्या क्या होता है बच्चों ये सब में? सो डायरेक्ट सेल फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स. डायरेक्ट सेल चिल्ड्रन मतलब फार्मर जाके डायरेक्टली मार्केट से बेचेगा. सो वी आर रूलिंग आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मिडलमैन दैट दे एग्जिस्ट चिल्ड्रन. अच्छा, दूसरी बात, टू सेट अप स्पेशल मार्केट्स फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. तो हर एक प्रोडक्ट के लिए, ज्यादातर जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए हमने कुछ अलग से मार्केट्स सेटअप किए बच्चों लोग. सो डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो ज्यादातर पेरिशेबल होते हैं. अच्छा, फिर हम लोग प्राइवेट लोगों को, फार्मर्स को परमिशन देते बच्चों लोग टू एस्टेब्लिश न्यू मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एनी एरिया. तो किसी भी एरिया में नए मार्केट्स को सेटअप करने के लिए परमिशन दिया जाता है. देन वी हैव अ सिंगल लेवी फॉर द मार्केट फी. मतलब एक ही जगह पे मार्केट का फीस बनाए, जगह जगह पे, मतलब आपको लूटा नहीं जा सकता है. अच्छा, लाइसेंसिंग को हम लोग रजिस्ट्रेशन के साथ रिप्लेस करेंगे. पहले लाइसेंस लगता था, अभी आपको क्या करना है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन. अच्छा, डायरेक्ट सेल टू द consumer and creating required market infrastructure. So this is something children provided by the agricultural product marketing committees in India. Achha, so which is hoping to create a national market for the entire agricultural produce, we can say. अच्छा, और जहां पे आप देख सकते हो कि लाइक फ्री मार्केट्स परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, एंड लाइक we are trying to create some obstacles in the functioning of free markets, right? To have some terminal markets which would be operate on hub and spoke format, where the terminal markets would be linked to a number of collection centers. तो अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस करने का, वहां से एक हब में लाने का, और वहां से स्पोक्स है बच्चों लोग, ऐसे कैसे सेंटर्स होते हैं ना, कांटे. तो एक जगह पे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करो, फिर वहां से फिर आप उसको सप्लाई करोगे. ओके, सो Department of Agriculture has issued some advisory for improving the agricultural marketing in India. अच्छा, तो सबसे पहली बात, पूरे के पूरे एक स्टेट को एक सिंगल मार्केट करके डिक्लेयर किया जाएगा चिल्ड्रन. वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड द स्टेट इनटू सम सब मार्केट्स. सो वन स्टेट वन मार्केट, राइट? अच्छा, फिर पूरे के पूरे स्टेट में अगर आपको डील करना है तो आपको अलग अलग लाइसेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. वन लाइसेंस फॉर द एंटायर स्टेट. अच्छा, फिर एक ही स्टेट के अंदर जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सब रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग हटा रहे हैं, एंड वी हैव अ कॉमन नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, दैट इज नाम करके बोला था उसको, थ्रू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ओके, अतीफ करके बोला था उसको. So, the Inter-Ministerial Task Force on Agricultural Marketing Reforms has listed the above priority areas to introduce changes in the existing system. तो बच्चों लोग, like whether it's like legal reforms लाने यहाँ पे, या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टली जाके कंज्यूमर को बेचेगा तो डायरेक्ट मार्केटिंग. देन वी ऑल्सो रिक्वायर दैट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, फिर प्लेज फाइनेंसिंग, जैसे कि मैंने बोला, प्रोडक्ट मतलब फसल आपके गोडाउन में है, उसको आप किसी को प्रॉमिस करके वहां से लोन उठा सकते हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट द prices, मतलब minimum support price, for example, like the procurement prices that are existing children, and all those things will be basically done at a level children, which will be
beneficial to the farmers, and they will fetch some remunerative prices as such, children, right? Acha. So the model, children, that we were discussing was related to agricultural marketing in India. Okay, थोड़ा सा confusing topic है, especially the answer which we dealt in today. It requires lots of studying क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे words है, लेकिन I'll tell you what is important and what you need to study. In the coming lecture, children, we are going to start with the next chapter, which will be actually talking about the disinvestment policy in India. क्या पढ़ने वाले हम लोग? Disinvestment policy, and that should be our chapter number 10. Very interesting chapter जहाँ पे आपको बहुत सारा practical knowledge मिलेगा, and then that's how we'll be moving ahead with the portion that we have, children. Okay, so that's all for today, children. See you in the next lecture with the disinvestment policy of the government of India. Till then, bye everyone. Take care.